and welcome to the video. This is the fifth video of this first module. Okay, this is first module we are just completing today only, and the sixth video of the course. फर्स्ट वीडियो सिलेबस के ऊपर था, राइट? तो आज का वीडियो का जो फंडा है हम लोग समझने वाले ये प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज करने वाले हैं, राइट? तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिंट फंक्शन काम कैसे करते हैं, राइट? तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, राइट? तो यहाँ पे इसे समझाने से बेहतर है कि कोड लिखे, राइट? तो आई ऑलरेडी क्रिएटेड वन पाइथन फाइल, just okay, let me okay, I already created one python file here, my folder, one of the folder second.py. Okay, you should also create, okay, second.py or anything.py. And now I'm going to write here print and hello and world. You will get to see that we have hello world. And now if I write something like that, hello and world, you will see same result like that, right? But there is a difference, right? There is only one string. Okay, if you're not understanding what is the string, we are going to discuss later. And if you see here, there is multiple objects, right? There is one object, there is one object, there is only one object is there, right? So if you try to hover down print function, you will get to see there is a function in our built-ins.py. This is the one of the stub file, right? Stub file क्या होता है? You can go let me of the file. The interpreter is written in C, right? But these are the files which is helping to run our program. That's why we are calling a stub file. Okay, you can say it's a compiler like file. Okay, these are the helping our code to execute. So there is a to print. We are not going to understand this one. Okay, we are going to understand this function because we are using this. Okay, and our motto is to in 3 module we are going to understand this whole code here, because these are the like key fundamentals code we are going to implement. Okay, so okay, let me go here again. Okay, so we are going to understand this, right? So let's understand. Let me go on the ppt. Now you can see here there is a value. तो सबसे पहले जो प्रिंट फंक्शन में हमें देते हैं, लेट्स सी प्रिंट, तो वैल्यूज मीन्स वैल्यू एक भी हो सकता है. लेट्स सी एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सी a बराबर 10 एंड b बराबर 20. वैल्यूज एक भी हो सकता है, सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं सिंपली, एंड मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं कॉमा लगा के. ओके, मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं कॉमा लगा के. प्रिंट दिस इज नॉट फॉर दैट रीजन, बट जस्ट मैं उसके लिए दे दिया हूँ. ओके, ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट जब भी देते हो तो कॉमा रहता है. ओके, ए एंड कॉमा लगा के बीच भी दे सकता हूँ. तो आई कैन गिव द मल्टीपल आर्ग्यूमेंट लाइक आर्ग्यूमेंट, यू कैन से दैट, और ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं. एक तरह का ऑब्जेक्ट ही तो है पाइथन सब सब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पे मैं मल्टीपल वेरिएबल दे सकता हूँ. ओके, नाउ एक जब एक ही एलिमेंट है तो मैं सेपरेट क्या करूंगा? अब हमने ये समझ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस सेपरेट आर्ग्यूमेंट. तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेटर. ये बिल्ट इन फंक्शन क्या है ये सब बाद में समझेंगे. फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम लोग ये फंक्शन बार बार यूज करने वाले हैं तो इसे समझना जरूरी है, राइट? तो उसके बाद सेपरेटर की बात करते हैं. तो जब हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज करने वाले ए बी सी डी, राइट? तो मान लो सी का वैल्यू 30 है, डी का वैल्यू 40 है, राइट? तो लाइक हम चाहेंगे कि एक दूसरे से सेपरेट रहे, ये इससे सेपरेट रहे, ये इससे सेपरेट रहे, ये इससे सेपरेट रहे. तो राइट, हम लोग यूज कर सकते हैं सेपरेटर, राइट? तो डिफॉल्ट सेपरेटर क्या है? डिफॉल्ट सेपरेटर, इफ यू सी द व्हाइट स्पेस इज द डिफॉल्ट सेपरेटर. White space is the default separator, right? So what we are going to do, just come here and just comment it down. Okay, I'm going to comment down both. And okay, ये पहले वाले को रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे okay नहीं ठीक है. A is equal to 10 we're going to, okay, and B is equal to 20, C is equal to 30 and D is equal to 40. Okay, I can print here simply. Okay, print a comma b comma c comma d. Now
if you use here separator, there is no use because there is only one element. You can use like, but there will be no uses. Like I can use, let's say मैं यहाँ पे चाहता हूँ I want this 3 hyphen और मैं यहाँ पे separator यूज करूँगा तो you will get to see the result clearly 1 2 3. नाउ यू विल सी कि अब जो एलिमेंट है जो इसके अंदर सॉरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सेपरेट हो चुका है एक स्पेसिफिक चीज से। हम यहाँ पर अगर ये छोड़ दें, ओके, अगर मैं इसको हटा दूं तो आप डिफॉल्ट वाइट स्पेसेस आएंगे, राइट। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉमा भी दे सकता हूँ, तो कॉमा से ये सेपरेट हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स, राइट। 10 20 30 लाइक, तो ये समझ में आया, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द third part, third argument, which is the end. Okay, so we understand this value separator. Now it's time to understand end. तो end क्या है? तो end is like what you want to print at the end of the result, right? If you are using this, you will get like 10 output. If you are using this, you will get like I'm using here, like I'm using with end also. Let me remove this, like A, B, C, and D, and I'm using separator also. I'm going to use here comma, and I'm going to use here end. So if I use end with the, let's say this is the ending, you can pass here a string, right? You can pass here a string ending, and you can pass anything else. यहाँ पे separate हो रहा है कुछ भी, whatever you want. ओके, तो whatever we like to have, and यहाँ पे भी हम लोग एक ending लगा सकते हैं, राइट, कि ये जब हो जाए तो यहाँ पे ending लगा सकते हैं, राइट। तो चलो we can try it, like यहाँ पे like end is equal to end 1, and we can use here end is equal to end 2, right। if you see the result, like ये पहले वाले जो है, ये पहला इंड क्या है कि ये लाइक कि एक ही लाइन में रिजल्ट प्रिंट कर देता है। दैट्स द रीजन इट इज कमिंग वन लाइन, राइट। इफ यू सी हियर, लाइक इफ यू hover here and if you go on print function, if you go there, you will see like by default it is like it's showing new line, but by default it's showing new line. But if you are using something in your like string means what, if you are using something else here, it is going to print in same line. That's why its result is coming the same line, right? So you get the understand, right? You get it, I hope. Now our fourth is file and flush. We are going to understand, right, these two, right? These two is not for now, but we are going to understand. Okay, ये file, when we are working with file operations in our operating system, like we are creating like a.txt and उसमें मुझे कुछ लिखना है using Python program, तो we are going to use, and यहाँ पे like supports dot write string or जो whatever we want to write, we can write. Now like when we are working with file handling, we are going to understand this file argument of print. For now you can like skip this. Now flaws is important. flaws क्या करता है? flaws करता है कि you are using this variable, you are printing here, but यहाँ पे पाइथन में क्या है, लाइक कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है कि वो आपका मेमोरी को फ्री कर देता है ऑटोमेटिक। बट C++ जैसे लैंग्वेजेस में ये फीचर्स नहीं है, बट पाइथन में है, तो राइट। तो ये फ्लॉस भी एक तरह की हमें वो फैसिलिटी देता है जो गार्बेज कलेक्शन करते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये फ्लॉस पे अगर आप देखोगे इसके बारे में, तो आपको फ्लॉस से मालूम पड़ेगा कि ये हमें क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट तो लाइक कि फॉल्स रहता है, बट अगर आप चाहो तो ये फ्लॉस इक्वल टू ट्रू भी रख सकते हो। ये क्या करके आप फोर्सफुली आपके जो वेरिएबल आपने जो भी यहाँ पे लिखे हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, उसका वैल्यू आपको मेमोरी से हटाएगा, राइट। तो ये क्या यूज करता है, राइट। अब इतना तो समझ गया कि हमने ये पांचों आर्गुमेंट समझ गए, ये फोर आर्गुमेंट समझा, फोर्थ को छोड़ दो अभी के लिए। व्हेन वी आर वर्किंग विद फाइल्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नाउ ये प्रिंट फंक्शन काम कैसे कर रहा है, लाइक दिस फंक्शन यूजिंग
this like sys dot standard output dot, right, I think dot, yeah, system dot standard output dot print, I think print. दिस इज द सोर्स ऑफ दिस फंक्शन। लाइक सिस्टम के स्टैंडर्ड आउटपुट में प्रिंट फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं। इफ यू आर वर्किंग विद इनपुट यू कैन यूज सिस्टम दैट स्टैंडर्ड इन dot input when we are going to get some error, our system, how our system is giving a error, system dot standard error dot error. So these three things we are like frequently using in our program. That's why we need to understand our system जो यूज करता है, ये फंक्शन यूज करता है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट और प्रिंट। अगर इनपुट हम लेंगे तो सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड इनपुट एंड इनपुट फंक्शन, एंड इधर के लिए तो आपने समझ गया। आई होप आपको ये प्रिंट फंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो एंड कमेंट करके बता सकते हो if you have some suggestion to add here, and please go on channel dashboard and you will get the Python playlist. Just follow it, you will get the amazing video there. Thank you for watching.